Welcome to my video lesson of the chapter Environment Part 2, Class 7th. Before that, stay at home, fight COVID 19, help the country. This is our first chapter, and I'm here with the second part of this chapter. First of all, domains of the environment, which you can see in the picture. These are four domains, and actually environment word came from the French word environner meaning neighborhood. So it's all about your neighborhood. Environment is all about your neighborhood. आपका आस पड़ोसी आपका environment जो है बनाता है. अपने आसपास देखिए, look at your surrounding, make a list of uses that the land in your neighborhood is being put to. आप लिस्ट बना सकते हैं जहाँ उस लिस्ट में आप बता सकते हैं कि लैंड जो है किन किन कामों के लिए आपकी नेबरहुड में यूज़ हो रहा है. वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल come from? Have you seen anyone wasting water and how they are wasting? Make a note of that. Observe the sky while coming to school. Make a note whether the day is cloudy, rainy, sunny. You can make a list of that. Also, the condition of atmosphere. Domains of water referred to as hydrosphere, as you know, as I taught you in the class 6 also. There are different sources of water actually. That sources may be water bodies, river, pond, well. These all are the sources of. So, environment is our neighborhood. Hydrosphere, I was telling to you about hydrosphere. Hydrosphere actually refers to the water bodies like river, lakes, seas, ocean, etc. And you know that water is very essential for your life, even for my life, even for the life of animal, which you can see and which you cannot see even. The atmosphere is a thin layer of air that surround the earth. Now atmosphere, in the previous class I told you that atmosphere is a thin layer of air surround the earth, and that air due to gravitational force, earth hold the atmosphere around it. It protect us from the harmful rays. So what are the functions of atmosphere? Provide us air. It protect us from the harmful and the scorching heat of the sun. It consists of number of gases. Actually atmosphere refers to the different mixture of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Actually weather and climate refers to the atmospheric conditions. Plant and animal kingdom together make biosphere or living world. So plant and animal kingdom makes biosphere. It is very narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other. And what is ecosystem? The next thing is ecosystem. It's a system formed by the interaction of all the living organisms with each other and the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. Which thing I think you are familiar that transfer of energy is very important concept in the science. So ecosystem basically uh, immediate surrounding of an animal or a living organism on which he or she depends. That refers to, and that refers to ecosystem. The next picture, sketch or bring photograph of your place, like the student in the story. You can make sketch of this picture at an NCC camp that Ravi class was attending. Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminded me of my home in Kerala. You should come and see how it pour over the lush green field and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kicker and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Rabi. So Rabi told about the desert conditions, and Jesse told about the conditions of Kerala, where heavy rainfall is very common. A pond ecosystem. Hira says not just a camel.
Figure 1.3, a pond ecosystem. You can see water, animal depends on water, plants depends on sunlight and water. So these dependency makes ecosystem. So Hira says not just camel. If you visit in desert areas, you will find other animals also there, like snakes, lizards, and many insect too. Ravi wondered why do the animal, the vegetation, and the way people live vary from place to place. Have you seen that very less plantations or plants are there in the desert, while plants are more in the rainfall, where rainfall is more in those areas. So this difference is how Ravi is asking from his teacher. Teacher replied, on 5th June every year the World Environment Day is celebrated. On 5th June every year we celebrate World Environment Day. Talk to some elderly person in your neighborhood and collect information about. You can do this exercise at home. The tree in his her neighborhood when he she was your age, the indoor games she played, his her favorite fruit at your age, how did they make themselves comfortable. So you can make a list of these questions and you can ask from your elders in your home about these questions, that how did they make themselves comfortable during hot summers and cold winters. आपने देखा होगा कि आजकल तो फ़ैन और एसी होते हैं, पहले के ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो बड़े हैं, वो किस प्रकार से अपने आप को कंफर्टेबल बनाते थे, फिर उसको एक एक नोटबुक में आप राइट करके रखिए उसको, ठीक है। अगली पिक्चर में द बार्टर सिस्टम, इट्स अबाउट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों अपने घरों में लोग आटे के बदले चीनी और ये सब चीज़ें जो है एक्सचेंज करते हैं, तो इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बिफोर द लॉन्च ऑफ मनी, द बार्टर सिस्टम वॉज देयर वेयर पीपल exchange goods by the use of goods. All plant, animal, and human beings depend on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. So every animal, every plant, and this biosphere depends on each other. This relation between living organism, this dependency actually, ये जो dependency है living organisms की, as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. तो एक organism की, एक living organism की, उसकी सराउंडिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है, जैसे हमें पानी चाहिए तो पानी पास में अवेलेबल होना चाहिए, ये सब चीज़ें इकोसिस्टम बनाती है। जैसे एक लाइन है तो उसके लिए डियर होना चाहिए, डियर के लिए प्लांट होनी चाहिए, और उनके लिए वाटर बॉडीज़ होनी चाहिए, तो ये सब मिलकर इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, and there may be, आपको लगता है कि जहाँ रवि खेलता है वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है? यस, दैट मे बी इकोसिस्टम। ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है दैट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन, और इन ह्यूमन अपने हिसाब से जो मॉडिफाई किया है, इसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की संज्ञा दे सकते हैं। तो अगला सवाल ये आता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता कैसे है? ह्यूमन मॉडिफाई करता है। सो ह्यूमन एनवायरनमेंट, actually human, we people modify the environment according to our need by the help of our knowledge, intelligence, and efficiency. For example, we people grow crops, we learn the domestication of animals and started settled life. Wheel invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade and commerce developed, industrial revolution enabled large-scale production, and transportation became faster. Nowadays, you can see internet is there, information revolution made communication easier and speedy. Have you ever thought that we like to eat watermelon in summer while we like to eat roasted peanut in winter? Why this is so? This is due to human, this is due to environmental need, and we actually depend on environment
and we cannot modify that much. So we have to learn the harmonious way to live with the environment. Nori is a girl from Mizoram, and she invited Ravi to see his lush and green surrounding of her place in Mizoram. Okay. In the chapter, teachers ask the student to draw the landscape, houses, and activities of people and place they visited during the holidays. Actually, they are planning to visit Mizoram, Nori's home state. दिस इज़ द एंड ऑफ अवर चैप्टर, एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है. उसके बाद आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वो आपको करने हैं. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे. जैसा व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, आई टोल्ड यू दैट the interdependency of an organism on its immediate surrounding refers to ecosystem. Natural environment, it is also there. Which are the major component of the environment, that is also there. So you have to go through these question answers and you have to write the answer of these questions in your notebook. और जब भी स्कूल ओपन होगा तो आई विल चेक योर नोटबुक्स. तो इसीलिए इनको जो है आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है. ओके. What is an ecosystem? I told you it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. If in simple word I say that interdependency of animal on their immediate surrounding refers to ecosystem. Each and every animal and microorganism have their own ecosystems. The next question is, what do you mean by natural environment? So natural environment is land, water, air, plant and animal comprises the natural environment. है ना. Likewise all these questions you have to attempt. For example, next, major component of environment. I told you three components of environment: natural, human made environment. For examples of human made environment, for example this transport, road, aquarium, these all are the example of environment. लिथोस पे आप बता सकते हैं easily what are the two major components of biotic environment. तो biotic environment के जो है दो major component, these are two components are animal kingdom, plant kingdom. बायोस्फीयर आप बता सकते हैं easily. टिक द करेक्ट आंसर आपने खुद करने हैं. और इसके आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल जो नेचुरल नहीं है, जो इंसान ने नहीं बनाया है. डेजर्ट इंसान ने नहीं बनाया है, फॉरेस्ट इंसान ने नहीं बनाया, इक्वेरियम इंसान ने बनाया है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है. विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो ये हमें देख, देन दैट इज़ व्हाट, लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी. रिलीजन इंसान की तरह बनाई गई चीज़ है, कम्युनिटी इंसान की तरह बनाया गया है. लैंड नेचुरल है जो कि इंसान ने नहीं बनाया है. विच इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट रोड है, विच इज़ ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट. सो ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ ए थ्रेट टू द एनवायरनमेंट. तो इसी तरह से बच्चों आपने ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कंप्लीट करने हैं. अपनी नोटबुक में इनको लिखना है और एक भी दिन आपने बर्बाद नहीं करना है. जब भी स्कूल ओपन होंगे उसके बाद ये चैप्टर आपको सिर्फ रिवाइज़ करवाए जाएंगे, अलग से नहीं करवाए जाएंगे. इसलिए आप इन वीडियोस को बार बार देखें. और अगर कोई डाउट हो तो आप अपने ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें भी आप इनको क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. तो आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें इंडेक्स मेंटेन करना है. इंडेक्स मेंटेन करने के बाद आपने चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है वो भी करनी है. साथ में कुछ आपने 10 के आसपास जो टिक द करेक्ट आंसर है उसी तरह के क्वेश्चन आंसर भी आपको बनाने होंगे. ठीक है. इसके बाद जो है इस चैप्टर के लास्ट में एक एक्टिविटी है जो एक्टिविटी 5 है. तो आपने एक ड्राइंग बनानी है. आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट
इमेजिन करना है, ड्रॉ करना है, जहाँ पर आप रहना पसंद करेंगे, लव टू लिव। और ये पिक्चर जो आप ड्रॉ करेंगे, ये आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। और इस प्रकार से ये भी आपका एक होमवर्क रहेगा। और लास्ट में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको इसमें क्या करना है। जैसे कि होम असाइनमेंट दी गई होगी आपको, उसमें आपको एक्सरसाइज करनी है चैप्टर की, आपको 10 MCQ करने हैं सिर्फ। और आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करेंगे और अपने पेरेंट्स के उसको साइन करवाएंगे। इसका एक ऑनलाइन क्विज होगा और मैं उसको व्हाट्सएप पे उसका पासवर्ड जो है डालूंगा, तो आप इस क्विज के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखें।